Good morning class. Today we will discuss the difference between simple interest and compound interest. Here I am taking example of two friends. They are two friends Riya and Prachi. Both deposit rupees 20,000. Riya deposit rupees 20,000 and Prachi also deposit rupees 20,000. Riya deposit in bank A and bank A is giving simple interest. Prachi deposit in bank B and bank B is giving compound interest. Both deposit their money for 3 years and rate of interest is same in both the bank, that is 8%. Suppose it is 8%. So let's see after 3 years how much the Riya will get. Riya deposit 20,000, bank is giving 8% per annum. Rate of interest is 8% per annum. So how much she will get after the 1 year? 20,000. So her interest will be 8% of 20,000, that is rupees 1600. After 1 year she will get 1600 because 8% per annum for 1 year. Then for second year again she has deposited 20,000, then on simple interest she will get 8% of 20,000, 1600, and in the same way for third year she will get 8% of 20,000, 1600. 20,000 she has deposited and 1600 plus 1600 plus 1600 rupees 4800 is her interest for the 3 year. So her amount after 3 year will be what she has deposited plus interest. So she will get 24,800 after 3 years. Now look here for Prachi, how much the Prachi will get. Prachi deposited 20,000 in bank B and bank B is giving compound interest. Now see what is the compound interest. She has deposited 20,000. So interest is same 8%. So she will get 8% of 20,000, that is rupees 1600. Now see the difference. 20,000 जमा करवाई, 1 साल बाद उसको इंटरेस्ट मिला 1600. Now compound interest means interest on interest. This 1600 is now her Prachi's money. 20,000 उसने डिपॉजिट कराया था, 1600 उसको इंटरेस्ट मिला. तो नेक्स्ट ईयर के लिए सपोज ये उसने 2010 में करवाया था, नेक्स्ट ईयर के लिए 2011 के लिए उसका मनी हो गया 20,000 प्लस जो उसको इंटरेस्ट मिला, दैट इज रुपीज 21,600 विल बी हर मनी. कहां से आया? 20,000 उसने जमा करवाया था एंड 1600 उसका इंटरेस्ट है, then 21,600 is now her money in 2011. So अब उसको इंटरेस्ट इस पे मिलेगा ना कि इस पे, because she is getting compound interest, interest on interest. So 80% of 21,600, so it will be rupees 1,728 after second year, after at the end of 2011 her interest will be 1,728. Now for the third year, for the 2012, in 2011 it was her money and she get an interest of 1,728, so her money will be this plus this, 21,600 plus 1,728. So it will be 8, 2, 6 and 7, 13, carry 1, 1 and 1, 2,
23,308. Now her money will be 23,328. She will get interest now on this money. 8% of 23,328, and when you multiply 8 with this, you will get 8 8 ja 64, carries 6, 8 2 ja 16 or 6 22, carry 2, 26, 6, then 18, and in the denominator 100, so decimal. So for third year her interest is 1866.24. What is the difference? In case of simple interest, आपको इंटरेस्ट किस पे मिलते हैं? जो मनी आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट करवाया, 20,000 डिपॉजिट करवाया था, तो आपको 20,000 का 8% ही मिलेगा एवरी ईयर. So 20,000 of 8% is 1,600. So आपको 1,600 ही फर्स्ट ईयर मिलेगा, 1,600 सेकेंड, 1,600 थर्ड. जो आपने स्टार्टिंग में कराया था उसी का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपने डिपॉजिट कराया आफ्टर फर्स्ट ईयर यू गेट इंटरेस्ट. अब वो इंटरेस्ट भी आपका हो गया, तो योर मनी प्लस इंटरेस्ट इज नाउ योर अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. फिर आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि अब ये मनी आपका हो चुके हैं. देन यू गेट द इंटरेस्ट. अब ये 1728 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी आपका है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस दिस, अब ये मनी टोटल आपका है. सो अब आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो थर्ड ईयर के एंड में आपका इंटरेस्ट ये हो गया. सो ऑल द 3 ईयर इंटरेस्ट विल बी, व्हेन यू ऐड दिस you will get here 4 2 as it is, so it is 4 here, 9 1 5. Now your interest is 5,194 for 3 years, but here the interest was 4,800. So here amount will be 20,000 आपने डिपॉजिट कराया था. 3 ईयर का इंटरेस्ट आपके पास ये हो गया. सो योर अमाउंट विल बी 25,194.24 रुपीज. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस. यहाँ अमाउंट आपका ज्यादा होगा और इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ये कम होगा, बिकॉज इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. But in case of simple interest, you are getting interest only on the money you have deposited. Clear?